The Rainbow Family is Muslim Aid's child sponsorship program. With a strong emphasis on education and physical and spiritual well-being, this program takes a holistic approach to guaranteeing a better future for children. Usman wants to grow up to be a soldier. ये हमारा घर है। यहाँ पे हम जो खाने के बर्तन होते हैं जो रह जाते हैं उन्हें धोते हैं। He's one of the lucky ones that benefits from Rainbow Family sponsorship. A few years ago, Usman lost his father, and the Rainbow Family program has given him and his family hope for a better future. तो शायद मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में। अच्छा। अगर ऐसा ना होता तो शायद मैं ज़्यादा ना पढ़ा सकती। अच्छा। बहुत ज़्यादा आगे तक जो मेरी सोच है, मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकी तो मेरे बच्चे बहुत पढ़े ताकि किसी के मोहताज ना हो, अपनी ज़िंदगी को इसी गुजारे। दूसरों की अगर हेल्प कर सकते हैं तो वो भी ज़रूर करें और एक मिसाल बने। जिनके साथ कोई नहीं होता वो भी अपनी हिम्मत पर आगे जा सकते हैं। Usman is the success story of the Rainbow Family program. But for every Usman, there are hundreds and thousands of children who have to live like this. This is Dilbar, who lives in a slum village on the outskirts of Islamabad, Pakistan. Because of the extreme poverty of his family, he has to work to support his father's meager income. अच्छा, तो आपका अबू जान क्या काम करते हैं? मजदूर हैं, तगारी उठा। अच्छा, तो आप ही काम करते हैं? बस नहीं, अबू भी काम करते हैं, तगारी उठाते हैं बस। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? ये गोले बेचते हैं। गोले बेचते हैं। अच्छा, तो दिन में कितने पैसे बनते हैं? 100-150 बन जाते हैं। अच्छा, तो ये आप चाहें तो ये काम करना आपको पसंद है या नहीं? पसंद तो नहीं है लेकिन गुर्बत है ना, क्या करें, करना पड़ता है ना। अच्छा, गरीब है, कभी खाना होता है कभी नहीं होता, कभी लंगर से खा के आ जाते हैं। मेरे अली शाह का लंगर है वहाँ से। अच्छा, इसलिए गुजारा सही से नहीं होता ना, इसलिए करते हैं, वरना शौक तो से नहीं करते ना, पूरा दिन बैठे रहते हैं गर्मी पे। अच्छा, वो हमारा 2010 में सैलाब आया था ना, उधर हमारी जगह मकान थी वो गिर गए थे। अच्छा, फिर इतनी पावर नहीं थी उनको दोबारा बनाने की। ठीक है। फिर इधर कैंप लगा के हम इधर आ गए। दोस्त है उस्मान, वो तो उसको तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो जो आपको स्पॉन्सरशिप मिला तो आपको वो पसंद है? यस। अच्छा, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? अल्लाह ने चाहे तो हो जाएगी। इंशाल्लाह। कोई बड़ा आदमी बनूंगा, माँ बाप का सहारा बनूंगा ना। अच्छा, So we've just been speaking to Brother Dilbar and his father. And to be honest with you, I'm finding it hard to tell you about the hardship that they live in and the suffering that they have to go through. And when I asked Dilbar about what he wanted to do when he grew up, he just said to me that I want to be a support for my family. And speaking to the dad, it was just like just everything that I wish for my children, or any of us wish for our children. This is exactly what they wish for their children. I mean, look straight ahead of you and look. Children are picking up trash, and this is how they make ends meet and support their fathers and support their sisters and support their families. This is the harsh reality of what's happening in so much of the world and to so many of our children. Your donations make such a massive difference to the lives of these kids. You can take children out of having to do this for a living and to spend their days doing things like this and give them back their childhood, give them back some hope. बस हम ये चाहते हैं जो बच्चे इतना वसाइल हो, जो इजीली ट्यूशन भी पढ़ रहे हैं, स्कूल भी पढ़ें और ये गोले ये बेचने वाले ये काम ना करें। ज़िंदगी अच्छी गुजरे। ज़िंदगी अच्छी गुजरी जाए। I can't imagine me being here or any of us being here with our children and absolutely having no way out of here and having no hope to try and
try and make a better life for our children. What Rainbow Family does is that it actually restores hope, and your sponsorship, what it does, it gives hope to these children. It actually gives them a chance, and it's not just the children who get hope, it's their families, because when these kids grow up, they'll actually go into some sort of career, and this is what Muslim Aid does. This is what's different about the Rainbow Family, in that it focuses this work on education, knowing that that's the best way to lift the poorest people out of poverty. So please, please, try to support these people. You can do this, and your donations mean this kind of difference to people who have to live their lives like this.